निर्वाचन तारीख घोषणा करेंगे निर्वाचन कमिशन। पश्चिमबंग, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं आसाम पई निर्वाचन तारीख घोषणा होगापाई जाउछि। पश्चिमबंग में 4 ରୁ 5ଟି पर्यायर निर्वाचन हो पारे। से भली केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी रे गोटे पर्यायर मतदान संभावना रही। निर्वाचन तारीख घोषणा करेंगे आउ किछि समय पर निर्वाचन कमिशन। तेणु ता उपरे रही समस्तंक नजर। आगामी समय देश में 5ଟି राज्यर विधानसभा निर्वाचन होगापाई जाउछि। पश्चिमबंग, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं आसाम रे वर्तमान चलीथिबा सरकार कार्यकाल शेष होगापाई जाउछि एवं ता पूर्वरु आज निर्वाचन तारीख घोषणा हो पारे। तेणु ए खबर उपरे देशवासी नजर रही एवं केबे तारीख घोषणा करा जाउछि, कौन सबू गाइडलाइन रहुछि बा एसओपी रहुछि, ता उपरे देशवासी नजर रही बेले आउ किछि समय पर 5 राज्य पई निर्वाचन तारीख घोषणा करेंगे निर्वाचन कमिशन। एथिपाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर केवल घोषणा को अपेक्षा रही। आम आपको चित्र वर्तमान देखौछु जेउठी मुख्य निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर अधिकारी तारीख घोषणा करछंती। सीनियर डीसीज श्री मनीष गर्ग, श्री ज्ञानेश भारती, डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, डीईसी श्री भानु प्रकाश यतुरु and DGIT Dr. Seema Khanna. Now may I request the Honorable Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar Sir to share his thoughts with you and announce the dates of polling. Sir. My dear electors of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, during the past few days, the Commission visited all the poll-bound states for reviewing the preparedness for the ensuing assembly elections. During these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity in diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia,
France, South Africa, Germany and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival of democracy. Chunav ka parv, hum sab ka garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May and West Bengal 7th of May. To give you a little overview of the electors, Assam, as per the final list, would be roughly 2.5 crores, Kerala 2.7 crores, Puducherry 9.44 lakhs, Tamil Nadu 5.67 crores, and West Bengal, the final list on 20th February comprises of 6.44 crores, and the learned judges, after their adjudication, whatever supplementary list comes, they shall be added. To give you a feel of the category of our electors, we have more than 100 years of age centenarians in Assam, Kerala, even Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. The 85 plus years of age electors are also good in number. Our Divyang Bhai and Bhai Behan, the first time electors, the electors from 20 to 29 years of age and service electors. These are statistics which will be circulated to you. A total number of 2.18 lakh polling stations shall be set up. Majority of them will be in rural areas. Average per elector is between 750 to 850, less than 900 in any case. The model polling stations will be set up in all the states and UTs, and there will be specially women-managed polling stations. Webcasting shall be 100% in all the polling stations, and there will be Divyang brothers and sisters managed polling stations as well.
The electoral exercise in India is one of the largest and most unique exercise in the world. For example, in Assam, the polling teams undertake arduous journey of 50 to 60 kilometers from Majuli via ferry and road, cross Brahmaputra river and finally reach the remote Dhanegana polling station where 248 electors are there and they reach there by tractor in the end. Similarly, in Kerala, Edamalgudi has around 693 electors, a tribal area of Idukki district, where the polling officials reach by completing 30 kilometers of journey through rugged off-road terrain by specified vehicles and followed by 8-kilometer trek by foot. Similarly, in Assam, West Bengal, in Alipurdar district, polling teams trek through the Baksa Tiger Reserve Hills to reach the polling booths of 759 electors. And similarly, in Tamil Nadu, Varusanath Hills, in Teni district, polling officers travel 3 hours across difficult terrain to reach 5 electors. Puducherry also, in its Chidambaram Pillai schools, once a French colony, was designated model polling stations, which has 2 polling stations of 722 and 651 electors. A total of 25 lakh election officials shall be deployed across 5 states and union territory, out of which 15 lakhs will be polling personnel, 8.5 lakh security personnel, 49,000 micro-observers, 1,444 observers, 40,000 counting officials, 21,000 sector officers, and 15,000 micro-observers for counting as well. The voter awareness campaign has progressed well, the maximum of which came through the special intensive revision enumeration forms. Apart from that, the Election Commission itself, the Chief Electoral Officers and our sweep icons have penetrated deep with the substantial range and depth to reach each and every voter. For EVM awareness, various camps have been organized at the district level and even at the returning officers level to ensure that the transparency, the efficiency and the information dissemination regarding this transparent electronic voting machines reaches the grassroots. The EVM awareness is Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. More than 717 demonstrations centers were set up. Polling stations through mobile distribution vans were set up. People participated in EVM awareness, which is roughly more than 28 lakhs. And people who tried mock polls also, the hands-on on EVMs were more than 25 lakhs. In order to ensure a pleasant voting experience, the Election Commission has issued directions that in every polling stations there shall be provisions for drinking water, toilets, signages, ramps, wheelchairs with volunteers, help desks, voter facilitation centers, sufficient lighting inside the voting compartment with adequate shade shall be there in all the polling stations. Special care shall be taken for all our respected senior citizens and Divyangjan. The polling station shall be on the ground floor. There shall be ramps. They have priority in voting. For seating arrangements, special benches shall be put up. They can also apply for home voting, and sufficient transport facility also will be available to our respected senior citizens and persons with disabilities. During the recent 12 months,
The Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent. The experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. The first one of them has been the special intensive revision, which ensures, in accordance with Article 326 of the Constitution, that no eligible voter shall be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. Amongst the new initiatives, just outside the gate of the polling station, an elector can go, deposit his or her mobile, go and vote inside and come out and collect the mobile and go back. In order to identify the candidate to whom the elector wants to select, there shall be colored photograph of all the candidates on the EVMs. In order to ensure that there are no long queues, not more than 1,200 electors shall be there in any polling station. The candidate booths can be set up just outside 100 meters of the polling station, and the voter information slip will have a clear number mentioning the voter's polling station, its number, and his part and serial number. Amongst the other new initiatives, one major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. The presiding officers of every polling station shall input the number of votes cast after every 2 hours to ensure that voting percentages which are being relayed through the media to the public at large is by and large accurate. And at end of the poll, whatever the figures are there in 17C, accordingly the percentage is also displayed without any further delay. All the booth level officers have been given identity cards so that our electors and the households can identify them easily. And since our electoral staff has been working very hard, their remunerations were also increased. ECI Night, as I mentioned, will be containing all the 40 different applications integrated in a seamless manner. In another initiative to enhance transparency, the postal ballots will be counted 2 rounds before the EVMs. Similarly, all the statistics relating to the elections shall be available through ECI Net itself within 72 hours of counting being over. In case of any difference because of typographical errors between 17C, which is given at the polling stations, to all the polling agents who are present, and the EVM count, if there is a difference, the VVPATs of that EVM shall mandatorily be counted. Similarly, after the counting is over, the losing candidate can prefer, after prescribed payment of fee, checking of the EVM along with VVPAT counting. In order to ensure that the entire process is done similarly at all the polling stations, a gigantic training effort has been undertaken by the Election Commission of India by training officers right down to booth level officers by the Commission itself. The booth level agents were also trained, of course the police officers, the DEOs, the communication officers, and this capacity building exercise had been piloted by
India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDM, which is run by the Election Commission of India. Election Commission of India also trains officers of more than 100 countries concurrently. In order to have a substantial dialogue and engagement with the stakeholders, the Commission adopted a consultative and collaborative approach by which more than 4,700 all-party meetings were held by all the returning officers, DEOs and CEOs of this country. Similarly, the Election Commission of India also invited all the national and state-level political parties to have such meetings, and more than 28 such meetings have already taken place. There has been national conference with legal councils and interactions with field-level beneficiaries, that is booth-level officers, EROs, DEOs, during the state visits. There have been other host of new initiatives which have been mentioned here, totaling to number 30. The slides will be there, and the Commission has been extremely proactive, transparent, efficient and consultative in its approach to ensure that the experience of election is much, much more pleasant to our prime stakeholder, that is the elector. Considering that India has been the mother of democracies and the largest of them all, with the most transparent elections taking place, the international idea is now currently being chaired by India. We also held an international conference with more than 70 countries. Next. Where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement-free and violence-free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now? Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142.
The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40. एप्रिल 9 रे आसाम रे हेबो मतदान गोटे पर्याय रे आसाम रे मतदान हेबा पई जाउछि ए संक्रांत रे निर्वाचन कमिशन को पक्षरु घोषणा करा जाइछि एवं अन्य राज्य अर्थात पश्चिम बंग तमिलनाडु केरल एवं पुडुचेरी उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिछि एपटे आसाम एवं केरल रे 9 तारिख रे हेबो मतदान ए संक्रांत रे घोषणा करिसंती निर्वाचन कमिशन एप्रिल 9 रे केरल रे एवं आसाम रे मतदान हेबा पई जाउछि एवं आमे जानिछे आसाम रे 126 टी विधानसभा आसन पई निर्वाचन हेबो सेहि भली केरल रे 140 टी आसन रे निर्वाचन हेबा पई जाउछि अन्यपटे पुडुचेरी रो 30 टी आसन तमिलनाडु रे 234 टी आसन एवं पश्चिम बंग रे मध्य 294 विधानसभा आसन रहिछि एवं ए सब भितरे आसाम रे एप्रिल 9 तारिख रे मतदान हेबा नै घोषणा करिसंती निर्वाचन कमिशन आज समस्तंकर नजर रहिथिला निर्वाचन कमिशन को ऊपर एवं तारीख घोषणा ऊपर केबे केबे ए पांचटी राज्य रे निर्वाचन हेबो बा तारीख कोन होई पारे ताकु नै अनेक चर्चा भितरे आसाम रे गोटे पर्याय रे निर्वाचन हेबो ए संक्रांत रे घोषणा करा जायछि एप्रिल 9 तारिख रे मतदान हेबा पई जाउछि एवं पश्चिम बंग तमिलनाडु पुडुचेरी ए सबुरे केबे निर्वाचन हेबो ता उपरे नजर रहिछि एवं आमे देखुथिले मुख्य निर्वाचन कमिशन को पक्षरु वर्तमान ए संक्रांत रे सूचना दिया जाउथिला किभली भाबरे निर्वाचन प्रस्तुति रहिछि किभली भाबरे निर्वाचन अधिकारी योजना करिसंती अबाध मुक्त एवं निरपेक्ष निर्वाचन करिबा पई से संक्रांत रे अनेक किछि सूचना दैछंती निर्वाचन कमिशन एवं आसाम रे एप्रिल 9 तारिख रे निर्वाचन हेबा पई जाउछि ए संक्रांत रे घोषणा करिसंती मुख्य निर्वाचन कमिशन दुईटी पर्याय रे पश्चिम बंग रे निर्वाचन हेबा पई जाउछि ए संपर्क रे मध्य घोषणा करा जायछि एप्रिल 23 एवं 29 रे पश्चिम बंग रे निर्वाचन हेबा पई जाउछि एप्रिल 23 तारिख रे तमिलनाडु रे पड़िबो भोट ए संक्रांत रे घोषणा करिसंती निर्वाचन कमिशन एप्रिल 9 रे तीनिटी राज्य रे भोटिंग हेबा पई जाउछि एप्रिल 9 तारिख रे आसाम रे निर्वाचन हेबो एप्रिल 23 रे मध्य भोट हेबा पई जाउछि पांचटी राज्य पई निर्वाचन तारीख घोषणा करिसंती निर्वाचन कमिशन एवं आमे आपनकु वर्तमान केउ राज्य रे केबे भोट अछि तार चित्र मध्य देखाउछु एप्रिल 9 रे एवं 3 रे भोट हेबा पई जाउछि केरल पुडुचेरी एवं आसाम रे मतदान हेबो सेहि भली पश्चिम बंग रे दुईटी पर्याय रे हेबो मतदान एप्रिल 23 एवं एप्रिल 29 तारिख रे पश्चिम बंग रे भोट हेबा पई जाउछि अर्थात दुईटी पर्याय रे पश्चिम बंग रे निर्वाचन हेबो एप्रिल 9 तारिख रे हेबो तीनिटी राज्य रे भोट केरल पुडुचेरी एवं आसाम रे एप्रिल 9 तारिख रे मतदान हेबा पई जाउछि सेहि भली वर्तमान समर बाई पांचटी राज्य भितरे सबुठु बड़ विधानसभा हेउछि पश्चिम बंग जेउठी 294 आसन पई मतदान निया जिवो एवं पश्चिम बंग रे दुईटी पर्याय रे मतदान हेबा पई जाउछि ए संक्रांत रे घोषणा करिसंती निर्वाचन कमिशन केरल पुडुचेरी एवं आसाम रे एप्रिल 9 तारिख रे भोट हेबो एवं तापरे परे पश्चिम बंग रे दुईटी पर्याय रे भोट हेबो अर्थात एप्रिल 23 एवं एप्रिल 29 तारिख रे पश्चिम बंगवासी भोट दबा पई जाउछंती तेणु वर्तमान समर बड़ खबर जो पांचटी राज्य उपरे नजर रहिथिला पश्चिम बंग तमिलनाडु पुडुचेरी केरल एवं आसाम ए पांचटी राज्य
राज्य में निर्वाचन कमिशन ए 5टी राज्य में निर्वाचन हेबा नहीं घोषणा करने सहित तारीख घोषणा कर आसाम 126टी आसन पर मतदान हेब पश्चिमबंग 294टी आसन में भोट हेब से भली तमिलनाडु में विधानसभा संख्या रही 234 केरल में 140टी आसन और पुडुचेरी में 30टी आसन में मतदान हेबापी जाउछि एवं एप्रिल 9 तारीख में 3टी राज्य में भोट हेब ए संक्रांत में निर्वाचन कमिशन घोषणा करिसेंती केरल समस्त आसन पुडुचेरी समस्त आसन और आसाम समस्त आसन में एप्रिल 9 तारीख में भोट हेबापी जाउछि से भली एप्रिल 23 और 29 तारीख में पश्चिमबंगवासी भोट देबे अर्थात पश्चिमबंग में 2टी पर्यायर मतदान हेबापी जाउछि ए संक्रांत में निर्वाचन कमिशन वर्तमान घोषणा करिसेंती 5टी राज्य निर्वाचन नहीं तारीख घोषणा करा जायछि एवं या परे जातीय राजनीति मध्य अनेक मात्रा रे हलचल हेबा स्वाभाविक अर्थात यहाकु नै अनेक मात्रा रे कसरत करा जिवो अनेक चर्चा हेबो खास करी कि पश्चिमबंग तमिलनाडु केरल ए सबु राज्य उपरे नजर रहिबो कारण ए सबु बड़ राज्य एवं ए सबु राज्य भविष्य रे अनेक किछि संदेश बा वार्ता दे पारंती तेणु ए सबु राज्य निर्वाचन उपरे नजर रहिबो पश्चिमबंग रे 294 विधानसभा आसन पई मतदान हेबो 2टी पर्यायर भोट हेबा पई जाउछि पश्चिमबंग रे एवं पश्चिमबंग राजनीति उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिछि अर्थात आमे देखिथिले गत निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाई देथिला पश्चिमबंग को हातेइबा पई चेष्टा करिथिला किंतु से समय ममता बनर्जी पुणी थरे बाजीमात करथिले एवं सरकार गठन करथिले तेणु वर्तमान समय पुणी थरे पश्चिमबंग उपरे नजर रहिबो एप्रिल 23 तारीख में तमिलनाडुवासी भोट देवाई जाउछन्ति एवं गोटे पर्यायर ही तमिलनाडु रे भोट हेबो मे 4 तारीख में 5टी राज्य रे हेबो भोट गणति अर्थात मे 4 तारीख में 5 राज्यर निर्वाचन बा भोटर गणति हेबो एवं फलाफल प्रकाश पाइबो 5 तारीख में स्पष्ट होइथिबो किए केउठी सरकार गठन करुछि एप्रिल 23 रे तमिलनाडु रे भोटिंग हेबो एवं गोटे पर्यायर ही तमिलनाडु रे हेबो मतदान से भली मे 4 तारीख में एई 5टी राज्यर भोट गणति हेबो एवं तापरे फलाफल प्रकाश पाइबो पश्चिमबंग में 2टी पर्यायर एवं अन्यपटे एप्रिल 23 तारीख में तमिलनाडु रे गोटे पर्यायर मतदान हेबापी जाउछि ए संक्रांत में घोषणा करिसेंती निर्वाचन कमिशन से भली मे 4 तारीख में ए 5टी राज्यर भोट गणति हेबो एवं किए विजयलाभ करुचंती बा किए पराजित हेउचंती से संक्रांत में घोषणा करा जिवो तेणु समस्तंकर नजर थिला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर बा 5टी राज्यर निर्वाचन तारीख बा निर्वाचन केबे हेबो ता उपरे नजर थिला एवं वर्तमान तारीख घोषणा हो सारी एवं तारीख घोषणा हेबा परे केउठी केबे निर्वाचन हेबो से संक्रांत रे आपण माने तथ्य देखुचंती एप्रिल 9 रे दुईटी राज्य रे हेबो एप्रिल 23 रे तमिलनाडुवासी भोट देबे गोटे पर्यायर ही तमिलनाडु रे भोटिंग हेबो से भली पश्चिमबंग रे 2टी पर्यायर भोट हेबो एवं मे 4 तारीख रे ए 5टी राज्यर भोट गणति हेबो और फलाफल प्रकाश पाइबो तेणु मे 5 तारीख स्पष्ट हेबो ए 5टी राज्य रे किए नुआ सरकार गठन करुछि वर्तमान रो सरकार विदाय होउछि वास्तव में जनतांकर जनादेश कौन रोची मे 4 तारीख में सबकिछि स्पष्ट हेबो एवं आज तारीख घोषणा हेबा सहित निर्वाचन ताती मध्य धीरे धीरे बढ़िबारे लागिबो अर्थात कसरत मध्य आरंभ होई जिवो अर्थात प्रार्थी चयन ठारू प्रार्थी बाछिबा ए तमाम दिगरे राजनैतिक दल माने वर्तमान कसरत करिबा आरंभ करिवे तेणु तारीख घोषणा को समस्तंकर अपेक्षा रहिथिला एवं निर्वाचन कमिशन किछि समय तले ए 5टी राज्य निर्वाचन संपर्क में तारीख घोषणा करिसेंती आउ तापरे मे 4 तारीख में ए 5टी राज्यर भोट गणति हेबो एवं फलाफल प्रकाश पाइबो अर्थात मे 4 तारीख में निर्वाचन पर्वर बा 5टी राज्य विधानसभा निर्वाचन पर्वर अंत हेबापी जाउछि एवं मे 4 तारीख में फलाफल प्रकाश पाइबो तमिलनाडु रे गोटे पर्यायर भोट हेबो सेहि भली पश्चिमबंगवासी 2टी पर्यायर भोट देबापी जाउछन्ती एवं मे 4 तारीख में एई 5टी राज्यर भोट गणति सहित फलाफल प्रकाश पाइबो एप्रिल 23 तारीख में तमिलनाडु रे हेबो भोट अर्थात एप्रिल 23 तारीख में गोटे पर्यायर ही तमिलनाडुवासी भोट देबापी जाउछन्ती एवं परे तमिलनाडु एप्रिल 23 तारीख में भोट देबो मे 4 तारीख में गणति हेबो एवं तापरे फलाफल प्रकाश पाइबो सेहि भली पश्चिमबंग रे 2टी पर्यायर मतदान हेबापी जाउछि एप्रिल 23 और 29 तारीख में पश्चिमबंग रे मतदान हेबापी जाउछि बा भोटिंग हेबापी जाउछि अर्थात पश्चिमबंग रे 2टी पर्यायर भोट हेबापी जाउछि एवं मे 4 तारीख दिन पश्चिमबंग रो फलाफल प्रकाश पाइबो एवं तापरे जना पड़िबो पश्चिमबंग एथर काहार हेबापी जाउछि तमिलनाडु रे गोटे पर्यायर एप्रिल 23 तारीख में मतदान हेबो सेहि भली पश्चिमबंग रे 2टी पर्यायर अर्थात एप्रिल 23 और एप्रिल 29 तारीख ए 2टी पर्यायर पश्चिमबंगवासी भोट देवाई जाउछन्ती ए संक्रांत में निर्वाचन कमिशन
घोषणा करिसेंती एवं तारीख घोषणा सहित वर्तमान राजनैतिक ताती मध्य बढ़िबो। ए पांचटी राज्य रे खास करिकी प्रार्थी चयन ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम एवं कसरत मध्य आरंभ हेबा पई जाउछि। पश्चिमबंग, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं आसाम ए पांचटी राज्य पई निर्वाचन तारीख घोषणा करि सारिछंती निर्वाचन कमिशन। आसाम रो 126 टी आसन रे मतदान हेबो। सेहि बली पश्चिमबंग रे 294 टी विधानसभा रहिछि। ए समस्त आसन रे भोट पड़िबो एवं पश्चिमबंगवासी दुईटी पर्याय रे भोट देबे। एप्रिल 23 एवं एप्रिल 29 तारीख रे पश्चिमबंग रे निर्वाचन हेबो दुईटी पर्याय रे। सेहि बली तमिलनाडु रे 234 टी आसन रही और तमिलनाडु रे गोटे पर्याय अर्थात 234 टी आसन गोटे पर्याय मतदान हेबो। तमिलनाडुवासी एकाथरके भोट देबे। से भली केरल रे रही 140 टी आसन और केरल रे मध्य गोटे पर्याय भोट हेबा पई जाउछि। अन्यपटे पुडुचेरी रे 30 टी आसन रही। तेणु तमिलनाडुवासी गोटे पर्याय भोट देबा पई जाउछंती। ए संक्रांत रे निर्वाचन कमिशन घोषणा करिसंती एवं मे 4 तारिख रे भोट गणति सहित फलाफल प्रकाश पाइबो। तेणु ए पांचटी राज्यर निर्वाचन फलाफल जातीय राजनीति को मध्य प्रभावित करिपारे एवं अनेक किछि समीकरण को मध्य परिवर्तन करिपारे। ता सहित आगामी भविष्यत रे केउ राजनैतिक दलर पल्ला भारी रहुछि ए मध्य गोटे संकेत बा वार्ता देबा पई जाउछि। तेणु आज समस्तंकर नजर रहिथिला निर्वाचन कमिशन को उपरे एवं तारीख घोषणा को समस्तंकर अपेक्षा रहिथिला। गोटे पटे भोटर तो प्रस्तुत हेबे, या सहित राजनैतिक दल मध्य आज ठारू विधिबद्ध भाव में प्रस्तुति आरंभ करिवे एवं मे 4 तारिख रे ए पांचटी राज्य रे होइथिबा निर्वाचन रो भोट गणति हेबो एवं फलाफल प्रकाश पाइबो। तेणु ए पांचटी राज्यर निर्वाचन एवं ता सहित फलाफल अनेक दृष्टिकोणरू गुरुत्व रखुछि। एप्रिल 23 तारिख रे तमिलनाडु रे गोटे पर्याय भोट हेबा पई जाउछि। 126 assembly constituencies for Assam. The polling shall be just in one phase and the polling shall take place on 9th of April, Thursday 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. पश्चिमबंग रे दुईटी पर्याय निर्वाचन हेबो अर्थात एप्रिल 23 एवं एप्रिल 29 तारीख रे भोट देबे पश्चिमबंगवासी, जेउठी 294 आसन पाई मतदान हेबो एवं पश्चिमबंग रो 294 आसन दुईटी पर्याय मतदान हेबो एप्रिल 23 रे एवं एप्रिल 29 रे। सेहि भली एप्रिल 23 तारीख रे तमिलनाडुवासी भोट देबा पाई जाउछन्ती एवं तमिलनाडु रो रहिछि 234 टी आसन, 234 आसन रे गोटिए पर्याय ही भोट हेबा पाई जाउछि। सेहि भली एप्रिल 9 तारीख रे तमिलनाडु एवं केरल रे भोट हेबो। ए क्षमा करिवे आसाम एवं केरल रे भोट हेबा पाई जाउछि। ए संक्रांत रे निर्वाचन कमिशन घोषणा करि सारिछन्ती। एप्रिल 23 तारीख रे तमिलनाडु रे भोट हेबा पाई जाउछि। पश्चिमबंग रे दुईटी पर्याय रे हेबो एप्रिल 23 एवं एप्रिल 29 तारीख रे। अन्य दुईटी राज्य एप्रिल 9 तारीख रे हेबो अर्थात केरल एवं आसाम रे एप्रिल 9 तारीख रे मतदान हेबा पाई जाउछि। आसाम रे 126 टी आसन रहिछि, केरल रो
40टी विधानसभा आसन पर गोटे पर्यायर मताधिकार सब्यस्त करेंगे जनता। ये 5टी राज्य निर्वाचन तारीख नहीं घोषणा करिसेंती निर्वाचन कमिशन एवं मे 4 तारीख में ए 5टी राज्यर निर्वाचन भोट गणति सहित फलाफल प्रकाश पाइब। तेणु जो 5टी राज्य उपर नजर रही बर्तमान निर्वाचन कमिशन से 5टी राज्यर तारीख घोषणा कर सारी। आसाम 126टी आसन रे गोटे पर्यायर भोट हेब एप्रिल 9 तारीख में। पश्चिमबंग में 294टी विधानसभा आसन रे भोट पड़ो 2टी पर्यायर एप्रिल 23 और एप्रिल 29 तारीख में। से भली तमिलनाडुवासी एप्रिल 23 तारीख में गोटे पर्यायर भोट देवे। तमिलनाडु रे रही 234टी विधानसभा आसन। अन्यपटे केरल रे 140टी विधानसभा आसन रही गोटे पर्यायर भोट देवे केरलवासी। एप्रिल 9 तारीख को तारीख धार्य करिसेंती निर्वाचन कमिशन। से भली पुडुचेरी रही 30टी आसन। तेणु এই 5टी राज्य निर्वाचन उपरे समस्तंकर नजर ता सहित फलाफल कौन हेबो ताकु नै मध्य अनेक चर्चा आलोचना आरंभ होईची एवं एई निर्वाचन रो फलाफल निश्चय आगामी समय देशर राजनीति केउ आड़कू जाउची विभिन्न राज्य रे किए सरकार गठन करूचंती तार मध्य अनेक किछि समीकरण परिवर्तन करिबा पई जाउची। तेणु एई 5टी राज्यर निर्वाचन यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण अटे एवं देशवासींकर मध्य नजर रहिथिला आजिर तारीख घोषणा उपरे एवं राजनैतिक दल माने मध्य आजिर ए तारीख घोषणा बा निर्वाचन कमिशन को सांबादिक सम्मिलनी को अपेक्षा करथिले। कारण तारीख घोषणा हेबा सहित विधिबद्ध भाव में वर्तमान राजनैतिक दल मानकर प्रक्रिया मध्य आरंभ हेबो। कारण प्रार्थी चयन ठारू किभली भाव में भोट मगाजिबो किभली भाव में योजना कराजिबो बा एजेंडा कौन रहिबो ए तमाम दिगरे वर्तमान राजनैतिक दल माने योजना आरंभ करिवे। डॉक्टर नलिन पात्र आम सहित रोचंती राजनीति समीक्षक। डॉक्टर पात्र आपन को स्वागत करुच्ची। 5टी राज्य निर्वाचन पई बा विधानसभा निर्वाचन पई बिगुल बाजी सारी तारीख घोषणा हो सारी। ए 5टी राज्य निर्वाचन को नहीं आपणकर कौन सबू अनुमान रोची एवं वर्तमान समय बा खास करी कि एप्रिल मे ए समय खरा कौन प्रकार बाधक हेबनी तो निहती देखो केवल खरा नुह अन्य बहुत जिनस जो जगार जो जो देखते परिवेश जो प्रकार अच्छी से खरारे जाकि विभिन्न जगह पानी जल संकट विभिन्न जगह देखा सारा किंतु गोटे गोटे बहुत बड़ कथा जो बड़ राज्य दुईटा जो अश्मता अच्छी गरम राजनीतिक पानीपाग जो गरम आसीज जो गोटे गोटे फेवरेट स्पीच को आज विशेषकर आपंकर जोटा देखुं जोटा पश्चिमबंग एवं केरल गोटे विराट चेंज होगापी अच्छी कि केरल जोटा जाऊँगी सीपीआई और कांग्रेस मध्य तो सही भितर कांग्रेस और सीपीआई से भितर जो 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 प्रकार से भितर प्रतिद्वंदिता रही से भितर भारतीय जनता पार्टी तार स्थान खोजापी जाऊँगी। सो ये जो उष्मता ये बारी जोटा आप कहले जो जल संकट किंतु विशेषकर जो गुड़ाक नुआ नुआ स्कूल खुल स्कूल छुट्टी है तो विशेष आम विशेष प्रतिबंधक सृष्टि हम ना खरा हेले भी लोकों पाखे भोट प्रतिशत निहाती भाव चलित निर्वाचन में बढ़ो ए सन्देह ना। आ जोटा कहले पुडुचेरी छोटिया राज्यटा से किंतु विशेषकर जोटा को से तमिलनाडु भी राजनीति बर्तमान सरगरम हो सारा नुआ नुआ दल से बाहर तमिलनाडु निर्वाचन में लोक भोट जो राजनीति तमिलनाडु लोकंर भोटर राजनीति निशा प्रचुर थाए ये दलपाई काटिबा देह काटिबा विभिन्न प्रकार करने विभिन्न प्रकार से हथकंडा आपणी था। सो से सब जगह जोटा कहते ये निर्वाचनटा जो पानीपाग कथा कहते जो खराटा कहते विशेष भाव निर्वाचन को प्रतिरोध कर विशेष प्रतिबंधक हडल्स क्रिएट करना बिल्कुल। एवं निर्वाचन कमिशन मध्य से आशा करिसंती कि प्रतिटी बूथ रे तमाम व्यवस्था कराजिबो जेमिति भोटर इच्छा प्रकाश करिवे आसीबा पई बा स्वतःप्रभुत्व भाव में आसी ए गणतांत्रिक पर्व में सामिल हेबे एवं निजर मताधिकार सब्यस्त करिवे से दिगरे निर्वाचन कमिशन मध्य अनेक व्यवस्था करि पारंती एवं सचेतनता कार्यक्रम मध्य अनेक मात्रा रे हाथ को नेबे। डॉक्टर नलिन पात्र आमे देखुचे बाकी 4टी राज्य रे गोटे पर्यायर निर्वाचन हेबो। पश्चिमबंग रे 2टी पर्यायर एवं बुझा पड़ुची 294 आसन रही 2टी पर्यायर हेबो किंतु एपटे तमिलनाडु रे मध्य 234 रहिथिबा बेले गोटे पर्यायर ही निर्वाचन सरी जाउची। पश्चिमबंग रे 2टी पर्यायर निर्वाचन हेबो याकु नै आपनकर कोन सब विश्लेषण रहिबो 2टी पर्यायर आवश्यकता केते रहिची एवं जो गैप रहिची ए गैप राजनैतिक दलंक पई केते गुरुत्वपूर्ण हेबो कारण एप्रिल 23 एवं अन्यपटे 29 रहिबो। देखो गत किछि वर्ष किछि निर्वाचन रे साधारण निर्वाचन रे जो प्रकार फेज वाइज
डिफरेंट फेज रे इलेक्शन करा जाउची सेला समस्त को राजनीतिक विशारद मान को निश्चित भाव विचलित करता है केतबेले 5 पर्याय किसी आवश्यकता न थाए से को जगह 5 पर्याय 3 पर्याय 4 पर्याय एमती गोटे गोटे जगह 4 पर्याय 2 पर्याय से कह जाए जो प्रकार फिजिकल बैरियर्स रही आमर आपन को जीवा आसिया बात ट्रांजिट लॉजिस्टिक सपोर्ट इत्यादि गोटे जगह जोटा जो कहते आप सुरक्षा बल विभिन्न प्रकार अरेंजमेंट जोटा आड़ देखा था आम करूँ जे 2-3टा पर्याय करूँ किंतु हर देश जोटा 28 जो बर्तमान आम जो चिंता करुचे गोटे दिन में सारा देश में निर्वाचन करने जो आम कथा होचे जो आलोचना चली जो भोटर मान को आम कहे आप नहीं गोटे दिन में आम सब जगह वन नेशन वन भोट आम कहे से भाया जो आड़ को जब आम गति करने जाऊे से 2टा पर्यायर इलेक्शन केमती कराटा निहाती भाव समस्त को यहाँ विस्मित कर जो चली किंतु देखा जाउची पश्चिम बंग भले गोटे जगह सेठी राजनीतिक पाणीपाग अति आपण देखुं शासक केन्द्र जो दल शासन क्षमता रही एवं राज्य में जो दल क्षमता अच्छी 2 जन प्रकार यही प्रकार टग ऑफ वार से भीतर चली राजनीति को लेकिन से जो प्रकार बर्तमान देखा जाइए केन्द्र मंत्री मानकर आगम सो ये भितर निहाती भाव निर्वाचन कमिशन कौन ना कौन रास्तार कौन ना कौन दिगरे सो कौन ना कौन बिंदु उपर निहाती भाव केन्द्र को सफल साहाय्य सहयोग कि प्रभावित कर भी समस्त लोक आशंका कर सो ये हाँ ये कहना गोटे राजनीति जो प्रकार कहकर जो सेंसिटिव बूथ जो प्रकार बूथ गुड़ा कहते सेंसिटिव बूथ गुड़ाए सेंसिटिव बूथ रही पश्चिम बंग में आउ से राजनीतिक हिंसाकांड प्रचुर मात्रा होता है सो प्रबल मात्रा होता है सो ये देखा जाऊँगी 2टा जगह निहाती गैपटा जो रोचे निर्वाचन कमिशन यही भाविक करेंगे आम यही जिन जो सुरक्षा बल को लेकिन मुतयन करवा किंबा से राजनीति को लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण अच्छी जोटा आपणकर भोटर मान को प्रभावित करें केन्द्र जो माने जो दल भावुवा आम से किसी पारती सो ये किसी जिन देखा जाता है तो 2टी पर्यायर केन्द्र जो निर्वाचन कमिशन करने को बाध्य हो पारती कि तार से भितर निहाती भाव कौन ना कौन जेहतु केन्द्र में सरकार अच्छी ये अभियोग आसूची निर्वाचन कमिशन निज इच्छा निज इच्छा कि बिल्कुल राजनैतिक दल तो विभिन्न प्रकार अभियोग करेंगे किंतु ए सब भितर निर्वाचन कमिशन निज सुविधा बा जेमिति सबकिछि ठीक ठाक ढंग से हो पारिबो ताकू योजना करी निश्चय ए तारीख घोषणा करा जायछि एवं निर्वाचन कमिशन वर्तमान मुख्य दायित्व किभली भाव में अबाध निरपेक्ष भाव में निर्वाचन अनुष्ठित हेबो एवं भोटर किभली स्वतःप्रवृत्त भाव में जाई निजर मताधिकार साब्यस्त करिवे भोटिंग परसेंटेज केमिति बा भोट हार केमिति बढ़िबो ए सबु तो निश्चय निर्वाचन कमिशन को पाखरे चैलेंज रहिबो एवं पूर्व अभिज्ञता को आधार करी ए सबु सुरुखुरुरे परिचालना करा जिवो ए आशा विश्वास आमे निश्चय करिबा एवं दर्शकों अवगत निमंते पुनि थरे कहि रखुछु एप्रिल 9 तारीख में 3टी राज्य में आसाम केरल और पुडुचेरी ए 3टी राज्य में गोटे पर्यायर निर्वाचन होगापाई जाउची तमिलनाडु में गोटे पर्यायर निर्वाचन होगापाई जाउची केवल पश्चिम बंग ही 2टी पर्यायर मतदान हेबो अर्थात एप्रिल 23 तारीख और एप्रिल 29 तारीख में पश्चिम बंग में निर्वाचन हेबो एवं तापरे मे 4 तारीख में 5टी राज्यर निर्वाचन बा भोटिंग भोटर गणति हेबो एवं फलाफल प्रकाश पाइबो एवं तापरे जना पड़िबो ए 5टी राज्य में किए नुआ सरकार गठन करुची ना पुराना सरकार जाउची ना कौन परिवर्तन करुचंती जनता बा जनादेश कौन आसुची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो किंतु तारीख घोषणा सहित वर्तमान प्रतिटी दिन राजनैतिक दलों पर यथेष्ट मात्रा गुरुत्वपूर्ण एवं अनेक मात्रा कसरत आरंभ हो सारी आज तारीख घोषणा पर वर्तमान फुल फेज बा पूर्ण मात्रा राजनैतिक दल माने कार्य लगिजे किभली भाव में जनता समर्थन को निज आड़ को गोटे हेब से दिगरे विभिन्न प्रकार प्रयास करा अर्थात योजना घोषणा ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रतिश्रुति विभिन्न कथा वर्तमान कहिबे तेणु गोटे प्रकार 5टी राज्य निर्वाचन तारीख घोषणा सहित परिवेश मध्य उष्म हेबारे लागिछि एठी एक छोट ब्रेक पाई आमे रोचे ब्रेक परे मध्य ए संपर्कित खबर जारी रहिबो। ईरान उपरे अमेरिकार आक्रमण जारी आक्रमण रे ईरान सामरिक प्रतिष्ठान छारखार हो जाइछि आक्रमण बेलर वीडियो जारी करिछि अमेरिका सेना B-1 बम्बर को आक्रमण रे व्यवहार करिछि अमेरिकार वायुसेना। मध्यप्राच्य युद्ध पाकिस्तान बड़ प्रभाव युद्ध लड़ुछि ईरान कांगाल होइगलानी पाकिस्तान भीषण आर्थिक स्थिति मुकुलिबा पई बाट खोजुछि पाकिस्तान सरकारी कर्मचारी दरमा काटिछन्ति पाकिस्तान सरकार। उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा पर दरमा ह्रास नहीं पाक प्रधानमंत्री घोषणा
सरकारी और स्वयंचालित प्रतिष्ठान गुड़िकर कर्मचारी दरमा ह्रास नहीं घोषणा मंत्री और सरकारी अधिकारी विदेश गस्त उपर भी कटकणा खर्च कमाइवाई एभली निष्पत्ति बोली कहिसेंति सरी सेपरि सरकार नुआ गाड़ी किणिबे नहीं सरकारी गाड़ी में 50% तेल कमाइबा निष्पत्ति पूर्व छुट्टी होता स्कूल ऑनलाइन होता पाठपढ़ा वर्क फ्रॉम होम चलता 50% कर्मचारी को चलता ऑफिस मध्यम राज्य युद्ध मध्य भारत पर बड़ आश्वस्ति भारत अभिमुखे आसुची 2टी एलपीजी गैस भर्ती जहाज शिवालिक पर नंदादेवीर सफल यात्रा जारी रही ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज अतिक्रम करिछि भारतीय एलपीजी जहाज नंदादेवी ए 2टी जहाज मोट 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी गैस आसुथुबा केंद्र सरकार पक्षरु सूचना दि जाइछि शिवालिक जहाज में 40,000 टन और नंदादेवी जहाज में 52,000 टन एलपीजी आसुछि 16-17 तारीख सुधा मुंद्रा और कांडला पोर्ट रे 2टी जहाज पहुंचबो बोली जहाज चलाचल मंत्रालय पक्षरु सूचना दि जाइछि 2टी जहाज को सुरक्षा देवा पई नौसेनार जहाज मुतयन करा जाइछि समुद्र पथरे सुरक्षा उपरे रही भारतीय नौसेनार कड़ा नजर गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक पथरे बाधा सत्वे भारत में पहुंचब गैस बड़ जहाज देश में एलपीजी गैस को नहीं संकट लगी रही बेले ये 2टी जहाज गैस संकट दूर करने आशा संचार होइछि देवगढ़ ट्रिपल मर्डर अभियुक्त रमेश गरिया बुर्ला मेडिकल मृत विष खाई गुरुतर होबारु चिकित्सित होता स्त्री बहु नातुणी हत्या पर फेरार थिला गतकाली गाँ पानी टांकी उपरू काबू करथिला पुलिस आज बदलिब राज्य में पानीपाग राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा सहित पवन होबार संभावना उत्तर ओडिशार 2 जिला को कालबैशाखी वर्षा ने अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र मयूरभंज बालेश्वर रायगड़ा जिले में कालबैशाखी वर्षार अधिक प्रभाव रहिब एथिपाई 3 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि सहित अन्य जिलागुड़ी को येलो अलर्ट दि जाइछि आसंता 18 तारीख में राज्य में कालबैशाखी वर्षार संभावना रहिथिबा पानीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दि जाइछि सारा राज्य में लगी रही एलपीजी गैस सिलिंडर अभाव विशेषकर कमर्शियल गैस अभाव बढ़ुवर होटेल शिल्प अधिक प्रभावित होती कटकर जनाशुना होटेल ग्रांड रेसिडेंसी उपर यार प्रभाव पड़ी ग्राहकों को सेवा जोगाइवाई होटेल कर्तृपक्ष पारंपरिक काठ चूल्हा को आपणाई ईरान उपरे अमेरिकार आक्रमण जारी आक्रमण में ईरान सामरिक प्रतिष्ठान छारखार हो जाइछि आक्रमण बेलर वीडियो जारी करिछि अमेरिका सेना B-1 बम्बर को आक्रमण में व्यवहार करिछि अमेरिकार वायुसेना मध्यप्राच्य में युद्ध पाकिस्तान में बड़ प्रभाव युद्ध लड़ुछि ईरान कांगाल होइगलानी पाकिस्तान भीषण आर्थिक स्थिति मुकुलिबा पई बाट खोजुछि पाकिस्तान सरकारी कर्मचारी दरमा काटिछन्ति पाकिस्तान सरकार उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा पर दरमा ह्रास नहीं पाक प्रधानमंत्री घोषणा सरकारी और स्वयंचालित प्रतिष्ठान गुड़िकर कर्मचारी दरमा ह्रास नहीं घोषणा मंत्री और सरकारी अधिकारी विदेश गस्त उपर भी कटकणा खर्च कमाइवाई एभली निष्पत्ति बोली कहिसेंति सरी सेपरि सरकार नुआ गाड़ी किणिबे नहीं सरकारी गाड़ी में 50% तेल कमाइबा निष्पत्ति पूर्व छुट्टी होता स्कूल ऑनलाइन होता पाठपढ़ा वर्क फ्रॉम होम चलता 50% कर्मचारी को चलता ऑफिस मध्यम राज्य युद्ध मध्य भारत पर बड़ आश्वस्ति भारत अभिमुखे आसुची 2टी एलपीजी गैस भर्ती जहाज शिवालिक पर नंदादेवीर सफल यात्रा जारी रही ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज अतिक्रम करिछि भारतीय एलपीजी जहाज पांचटी राज्य विधानसभा ने तारीख घोषणा करिसेंति निर्वाचन कमिशन एप्रिल 9 तारीख में 3टी राज्य में भोट हेबो अर्थात आसाम केरल और पुडुचेरीवासी गोटे पर्यायर भोट देवाई जाउछंती एप्रिल 9 तारीख में 3टी राज्य में मतदान होगा जाउथिबा बेले पश्चिमबंग में 2टी पर्यायर मेतदान हेबो एप्रिल 23 और एप्रिल 29 तारीख में से भली तमिलनाडु में एप्रिल 23 तारीख में गोटे पर्यायर मतदान होगापी जाउछि आसाम 126टी आसन पर एप्रिल 9 तारीख में गोटे पर्यायर ही मतदान हेबो से भली केरल 140टी आसन पर एप्रिल 9 तारीख में गोटे पर्यायर मतदान होगापी जाउछि एवं अन्यपटे पुडुचेरी 30टी आसन पर एप्रिल 9 तारीख में गोटे पर्यायर निर्वाचन हेबो से भली एप्रिल 23 तारीख में तमिलनाडु पर भोटिंग हेबो तमिलनाडु में रही 234टी विधानसभा आसन एवं एककालीन अर्थात गोटे पर्यायर ही केरल तमिलनाडुर 234टी आसन रे भोट हेबो। यह बाद पश्चिमबंग में 2टी पर्यायर
मतदान हेबो एप्रिल 23 तारिख में भोटिंग एवं एप्रिल 29 तारिख में एभली भाव में दुईटी पर्यायर पश्चिमबंगवासी भोट देवाई जाउछन्ते एवं पश्चिमबंग में रही 294टी विधानसभा आसन से भली मे 4 तारिख में ए तमाम राज्य बा ए 5टी राज्यर भोट गणति सहित निर्वाचन तारीख घोषणा करा आज निर्वाचन तारीख घोषणा सहित निर्वाचन नहीं प्रस्तुति संपर्क में निर्वाचन कमिशन विस्तृत भाव में सूचना देइछन्ति ता सहित ए 5टी राज्य निर्वाचन तारीख घोषणा सहित राजनैतिक दलों भितर वर्तमान कसरत आरंभ होगा स्वाभाविक कथा। पांचटी राज्य विधानसभा निर्वाचन नहीं तारीख घोषणा करिसेंति निर्वाचन कमिशन एप्रिल 9 तारिख में आसाम केरल और पुडुचेरी रे गोटे पर्यायर मतदान हेबो से भली एप्रिल 23 तारिख में तमिलनाडुवासी गोटे पर्यायर मताधिकार सब्यस्त करेंगे। केवल पश्चिमबंग में दुईटी पर्यायर निर्वाचन हेबो एप्रिल 23 और एप्रिल 29 तारिख में पश्चिमबंग में भोट हेबो एवं यही 5टी राज्य निर्वाचन भोट गणति मे 4 तारिख में हेबो एवं ता सहित फलाफल मध्य घोषणा हेबो। तेणु ये 5टी राज्य निर्वाचन फलाफल उपरे समस्तंकर नजर रहिबो। एसआईआर कार्यकारी हेबा परे निर्वाचन हेबा पई जाउची तेणु स्वच्छता अनेक मात्रा रे हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे। The polling station shall be on the ground floor.